on to the last ball. In fact, with just one ball remaining, Pakistan going on to win the game today, defeating India and thereby also getting the first victory in the Super 4. I'm Sakshi Mandwala and I would like to welcome over here in the studio my dear friend and co-host Amit Arora. Good evening, Amit. गुड इवनिंग साक्षी। तो पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हरा दिया है हीरो ऑफ 2020 में। क्रिकेट पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जय शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, और साथ ही जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। जया, बहुत ही थ्रिलर था, और जैसे कमेंटेटर कहते हैं ना, कमज़ोर दिल जो है ना ही देखें ना ही सुने तो बेहतर है। Definitely, it was heartbreaking. I mean, as an Indian fan and as a player as well, because we put up a good show in while batting, but I think at the end we lost, made mistakes as Arshdeep dropped a catch, and as we know that catches wins you matches, and especially in the shortest format of the game, it's heartbreaking. राजा, डू यू थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे कि आज जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने खास तौर से बल्लेबाजी करी है, दे वर एबल टू मेंटेन द रन रेट थ्रू एंड थ्रू. So somewhere did you actually feel that this was a game that the Pakistanis had got it in their pocket long back, or could India have had a chance to turn it in their favor? Somewhere you felt that. See, we are talking with the benefit of hindsight, Sakshi. And those 38 dot balls that India played in the innings, in making 180 plus, came back to bite the team. And I think on a flat deck where there was nothing much for the bowlers, it was always going to be difficult for India to contain a Pakistan team that was very intent on winning this game. Everybody who came in played shots. Everybody who came in was in control of the situation. Each of the Pakistan batters was. I think one or two. Hardik Pandya had definitely an off day, did not bowl the best he could, and I think Bhuvi had one bad over, and then Pakistan scampered home with that victory. I don't think there is anything to feel dejected about, except if India can cut down the number of dot balls that it concedes, that it plays during its innings. You would have had a better score to defend, and I think India will. That's probably one area where India will have to work on. This is the bowling you've got, and I can't blame the bowlers too much. I think it was the batters who could have got another 10-15 runs for India. जया, आपके हिसाब से हीरो ऑफ 2020 के दावेदार कौन कौन हैं? आई गेस बहुत क्लियरली यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने एक स्टेबलाइज किया. एंड एज आई ऑलवेज स्पीक अबाउट, बिकॉज ओपनिंग इज अ स्पेशलिस्ट जॉब, and to launch a fair ground for the batters to come and explore, I think Mohammad Rizwan is, despite of the fact that he got injured in the first inning while keeping, and I think he should be the choice. Raja, any other option? I don't think you look beyond Rizwan at this point of time, because he played the most decisive innings in the match. Virat Kohli, of course, had a good half century for India. But I think the match-winning effort came from Mohammad Rizwan. He not only scored runs at a fair clip, but also ensured that wickets would not fall. Even though Babar Azam was not in the best of forms, he ensured that the start would be good, and that he held his end up. I think he played the best knock of the night. Also, Raja, a lot is being said, in fact, about this bit कि in the 18th over जब असफ अली का कैच हमने देखा, इन्होंने अर्शदीप सिंह ने ड्रॉप कर दिया था, बहुत कुछ कहा जा रहा है इस बात पे भी कि शायद वहाँ पे द मैच टर्न्ड इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान. डू यू थिंक दैट्स द राइट वे टू पुट इट, और वाज द गेम ऑलरेडी गॉन फ्रॉम आवर हैंड्स? I think it was slipping away from India, and that drop catch only ensured that it slipped further. India needed wickets, and today we didn't have those match-winning bowlers. हमेशा बुवी शुरुआत में विकेट लेते हैं, या फिर यू विल फाइंड युजवेंद्र चहल पिकिंग अप विकेट. ये हुआ नहीं आज, and Pakistan played very smart cricket, and they made the most of the flat deck, and they kept getting those big boundaries, and especially in the second half of the innings. पहले 10 ओवर में उन्होंने विकेट नहीं गवाए बहुत ज़्यादा, and I think that proved very useful for them. Whereas India lost too many wickets. Rohit had got off to a good start, and then he got out in the 6th over. Rahul had got off to a good start, and he got out too. तो जब ये होता है तो
you obviously don't get enough runs. For a new batsman to come in and start scoring is always difficult. लेकिन पाकिस्तान के साथ ये हुआ नहीं, and I think they made the most of the situation. जी, यदि श्रोता भी अपने सवाल करना चाहें तो 011-2342-1084 2342-1085 पर फ़ोन कर सकते हैं. इस समय कुछ कॉलर्स फोन लाइन पर हैं, आइए उनको सुनते हैं. हेलो. हाँ सर, नमस्कार सर. नमस्कार जी. जी सर, आपका नियमित श्रोता हूँ मैं सर. आसाम नीलबगन से बात करता हूँ. जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान जीत गया 5 विकेट से. जी, दिल में तो बहुत सदमा हुआ है सर, हम नहीं जीते. जी. हम 2 कारण से मेरे हिसाब से हम हार गए. पहले तो रन 200 की पूरा होना चाहिए था. जी. और दूसरा कारण यही है कि आज हमारा कुछ कैचेस छोटे और फील्डिंग थोड़ा बहुत खराब हुआ. जी. जी, शुक्रिया. एक और कॉलर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. हेलो मैम, नमस्कार. मैं ग्राम सिरसिंडा पोस्ट वाराणसी जिला अयोध्या से कपिल देव बात कर रहा हूँ. क्या बात है कपिल देव जी. एक कपिल देव हमारी क्रिकेट टीम में रह चुके हैं और एक कपिल देव आज है जिन्होंने कॉल किया है. गुड इवनिंग, क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्रिया कॉल करने के लिए. जी मैम, गुड इवनिंग. दुख तो बहुत हुआ. वैसे कहते हैं कि कमजोर दिल वाले न सुने, लेकिन अपनी कमेंट्री में कैसे न सुनूं. इतना लगाओ, इतना प्रेम, में कैसे न सुनूं ये कमेंट्री सर. बहुत बहुत शुक्रिया. आप हम कमेंटेटर्स को बताएंगे हमारी कमेंट्री टीम की आप सराहना करते हैं. आप श्रोताओं की वजह से हमारी कमेंट्री टीम और ऑल इंडिया रेडियो आपके लिए सारे मैचेस ला पाता है. लेकिन जया, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो हमारे एक श्रोता ने कहा कि शायद हम 20 रन शॉर्ट पड़ गए, 200 हमें बनाने चाहिए थे. बट गिवन हाउ द पाकिस्तानीज केम टुडे विद द माइंडसेट फुल थ्रॉटल एंड जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी करी है, शायद अगर 20 रन ज़्यादा भी होते तो क्या आपको लगता है कि वो चेज़ ना कर पाते उसको? आई थिंक 20 रन सुनने में 20 रन लग रहे हैं, लेकिन 20 रन का मतलब होता है कि कई बॉलें आप कंज्यूम करते हो उसको बनाने के लिए. बहुत थॉट प्रोसेस लगता है बैट्समैन्स को. बहुत सोचना पड़ता है किस बॉलर को टारगेट करना है, किस बॉलर को टारगेट नहीं करना है. बट आई थिंक हमारी बॉलिंग आज पेनिट्रेटिव नहीं रही है, और वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज भुवनेश्वर नहीं चले, आज हार्दिक पांड्या नहीं चले, ना बैट से चले ना बॉलिंग में चले. तो आई थिंक जब आप जब आप स्कोर खड़ा कर रहे थे, आपने एज अ टीम यूनिट खेला. बट आई थिंक वी वर ऑल ओवर द प्लेस व्हेन वी वर बॉलिंग. जी. राजा, आप भारत की गेंदबाजी को कैसे आकलन करेंगे? भुवनेश्वर ने अपने पहले 3 ओवर में तो 21 रन दिए थे, लेकिन जो 19वां ओवर करने आए उसमें ओवर भी 19वां था, रन भी 19 ही दे गए. और वाइड किया. he didn't bowl the best he could. Wide 4 wide. जो भुवनेश्वर कुमार हमें नजर आते थे वो आज वो चौथे ओवर में दिखे नहीं. बट ये खेल है हमें. आई थिंक वी गॉट टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड मूव ऑन. ये सुपर फोर्स का पहला मैच था भारत का. आगे 2 मैचेस है, एक श्रीलंका के साथ और एक अफगानिस्तान के साथ. अगर आप दोनों जीतते तो फाइनल खेलते तो आप फिर भी टूर्नामेंट में यू आर अलाइव एंड यू कैन गो ऑन टू विन द एशिया कप. तो ये 1-1 की बराबरी हुई है, मान के चलो आप. सो फार विद पाकिस्तान आई थिंक वी मेक अ बिग डील आउट ऑफ दिस. दिस वाज अ ग्रेट गेम. रवि बिश्नोई इज कमिंग इन एंड बॉलिंग सो वेल. उनके अपने 4 ओवर उन्होंने सही डाले. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्लस फॉर इंडिया. बिसाइड्स ऑफ कोर्स विराट कोहली गेटिंग दैट वंडरफुल नॉक. समवेयर डाउन द लाइन सोचते तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या नहीं चलना. आई थिंक दिस वाज द टर्निंग factor for India. Just like you find Pakistani, anybody who came into bat was willing to throw his bat at the ball and score a few runs. And then of course Mohammad Nawaz played that brilliant blinder of an inning and got Pakistan over the line. But the second were you surprised, Jaya, कि मोहम्मद नवाज जो है चौथे पे खेलने आए ahead of खुशदिल and आसिफ, क्योंकि वो तो basically bowler भी तो हैं. I think that was the smartest play that Pakistan has done, and that's what we have been discussing about. The captains have to be instinctive, and it's all about instinct and at the moment what you need for your team. And I think that was a great move for Pakistan. राजा, एक चीज़ और आपने अभी जैसे वो जो बात बोली कि जो आज का मुकाबला हुआ, हमने अगर देखें तो दिस इज़ लाइक वी कैन लुक एट इट एज 1 game India won, 1 game Pakistan won. It was a day of good cricket that we witnessed. But just to go slightly back also, जो पहला इनकाउंटर भी हमारा पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, we won that game.
but it wasn't an easy win for us. Neither was this Yes, for neither, Pakistan, correct. right? Yes. So it's one all of tough contest. So ये you मान don't के say चलो. कि there No, I has been don't like think in terms of Indian performance, this let's is keep T- Pakistan out. No, this is T20, Sakshi. Ji. And in T20, these things happen, right? Yes, we can say that we would have liked to see Deepak Hooda bowl a few overs to the left-handers, bowl a couple of overs against the left-handers who were winning the match for them. It was the left-hander, especially Nawaz, who played that blinder. Correct. And then Asif Ali came and scored a few Yes. quick runs. So you wanted an off-spin bowler. You wanted maybe perhaps tried Deepak Hooda, but it's okay. I mean, this is a game, and we've got to accept that you can't be winning every single game. And I think Rohit tried his best. Unfortunately, Bhuvi didn't bowl that 19th over as well as we know him to, and Arshdeep tried hardest, right? मैच हाथ से निकल चुका था, उसके बावजूद अगर वो अपना जान लगा के लास्ट ओवर अच्छी तरीके से किया है. अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम there was one shot that he couldn't stop. Correct. But he picked up a wicket and bowled a couple of good Yorkers. I think there are positives for India, especially with Virat Kohli scoring the runs that he did and Rahul showing the intent at the beginning of the innings. So it's okay. I think India will get to the final and should beat Pakistan. Now they know what Pakistan is capable of and should beat Pakistan. जी आइए कुछ और श्रोताओं से बात करते हैं. हेलो. हेलो सर, मैं सुभाष राठौर बात कर रहा हूँ सर उमरगा से. जी. सर आज जो विराट कोहली ने जो बैटिंग की सर, वो आखिर में खास बैटिंग नहीं की सर. उनकी वजह से सर एक 10-20 रन शॉर्ट रह गए. जी. और सर आरसीबी का क्या छूटा वो भी बेकार हुआ सर. जी. भारत सर आखिरी के 5 ओवर में जो है ना सर, जी. बॉल गेंद रन बहुत कम बने सर. यही भारत के हार का कारण का बना सर. जी शुक्रिया. ओके, हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ रहे हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. हाँ मैम नमस्कार. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं ग्राम बंधवापड़ा जिला शहडोल से संजू साहू बोल रहा हूँ मैम. वेलकम टू आवर शो. क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है मैम कि ये जो भुवनेश्वर कुमार के 19वें ओवर में बहुत रन बन गए, तो क्या हमें कुलदीप यादव को नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज हैं. वाह, ओके, हम ये बात पूछेंगे ज़रूर. और एक और कॉलर हमारे साथ इस समय भी जुड़ रहे हैं. हेलो. हेलो नमस्कार. नमस्कार जी. मैं सुमार खान बात कर रहा हूँ, गांव दूढ़ावा तहसील सेडवा जिला बाड़मेर राजस्थान से. जी. जी सर, ये मैच है जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर होती रहती है, लेकिन जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने आज गेंदबाजी की है, हाँ जी, तो क्या 19 ओवर को और अर्शदीप को देना चाहिए था कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा? जी शुक्रिया. जया, मैं अर्शदीप की ही बात करूँगा. 17.3 ओवर और आसिफ अली जो है एक स्कायर फेंकते हैं और लगता है कि ये सिटर है. तो ये सिटर हाथ से फिसल कैसे जाता है और फिर मेंटल हेल्थ की दृष्टि से खिलाड़ी इसे भुलाए कैसे? That is the toughest question, because these things are the part and parcel of the game, and yes, that was a sitter, and that too in a game like India-Pakistan, where things could have turned up for India. But I think players are very professional nowadays, and they know, and especially let me tell you, Paddy Upton is with the team. And he is the mental conditioning guy for the What team. will Paddy Upton tell Arshdeep tonight? There are so many techniques and so many counseling sessions that you can do, and that is needed, because you need to keep that aside and come into the fresh game. And I think Arshdeep, because we all are professionals, and they know that they have to leave everything like in the last game behind. Right, and yeah. Sorry, Paddy will not say a word to Arshdeep tonight, because अच्छे माइंड कोच वो होते हैं जो ऐसे मौके पे कुछ नहीं बोलते हैं. Okay. So give him a day or two and then have a conversation with him. Good mind coaches, good mind trainers, good psychologists will not intervene at this point of time. ये कोई चोट नहीं है जिसको आप सीधे मरहम पट्टी लगा दें. You will allow the player to reflect a little bit and then step in at a later stage. Basically, let the situation be for the moment and come back at the right Yes, time. definitely. I But mean, yes, I think it's done and dusted for the day, Ji. and they will give him time to adjust to it, and I think then the good chat will do
for him. But I do have a question over here. हम अर्शदीप सिंह की इतनी बात कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने लास्ट ओवर बॉल किया एंड एक विकेट भी ड्रॉप किया, बट ब्रिंग्स टू माई माइंड द क्वेश्चन जो हमारे एक शो में, पहले शो में एक कॉलर ने पूछा भी था डेथ बॉलिंग को लेकर, और अगर हम उसको देखें तो लास्ट के 5 ओवर्स में नियरली 60+ रन चाहिए थे. एंड राजा, फर्स्ट आई टेक योर टेक एंड देन जया, आई वुड वांट यू आल्सो टू गिव योर टेक ऑन इट कि डेथ बॉलिंग को आज आप, क्योंकि उन्होंने बात उठाई थी कि डेथ बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं है, एंड आज जब हमारे पास एक गुड स्कोर था डिफेंड करने के लिए, हाउ डू यू एनालाइज द लास्ट 5 overs with over 60+ runs being chased down? Sakshi, first and foremost, we are assuming that 180 was a good score. We should have scored, India should have scored 10-15 more runs at least. It was capable. आप लास्ट ओवर देखिए, एक श्रोता ने कहा विराट कोहली लास्ट ओवर में रन नहीं बनाए थे. We picked up 8 runs. India picked up 8 runs of the last 2 balls, and then it got to 180. It did look like a bonus. बट एक तो स्कोर वॉज ओनली कॉम्पिटिटिव. अभी नहीं कह रहे हम, ये पहले भी कह चुके थे कि कॉम्पिटिटिव स्कोर था. अब इसके बाद आप डेथ ओवर्स की बात करें तो भुवी इज़ वन ऑफ योर मोस्ट सीजन बॉलर्स. भुवनेश्वर कुमार जैसे मीडियम पेस, फास्ट मीडियम गेंदबाज आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं. आज उनका ख़राब दिन चला एंड पाकिस्तान हैड विकेट्स इन हैंड. And I think that allowed them to go after him and pick a few runs in that last over. कितने 19 रन बता रहे थे. जी 19 रन. So that's a lot, right? And Bhuvi sometimes gives 3 ओवर में 19 रन देते हैं. तो ये 19 रन एक ओवर में देना, I think today was a bad day for him and we got to move on. See, बल्लेबाजी में गलतियां हुई है भारत से. हम हमेशा गेंदबाजों को दोषी ठहराते हैं. I think सूर्य कुमार यादव डिडंट स्कोर रन्स टुडे. मेरे सामने हमारे स्टैटिस्टिशियन का चिट्ठी पड़ा है जहाँ उन्होंने 3 मैच में पाकिस्तान के साथ T20 में सिर्फ 11 रन पहले मैच में, 18 रन दूसरे मैच में और 13 रन आज बनाए. तो when you're one of your best batsmen is failing, when Rishabh Pant is struggling to put bat to ball, and then when Hardik Pandya scores a 0, obviously your middle order has let your team down today, and I think that is where India lost the match. जी, पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, लेकिन मैं एक थोड़ी और क्यूरियोसिटी आपसे जानना चाहूँगा. सूर्य कुमार यादव जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं वो हमेशा च्युइंगम खा रहे होते हैं. क्या ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका होता है बल्लेबाज का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक सो. इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. आई मीन call it a superstitious behavior or call it a preference. हर एक प्लेयर का होता है. लाइक आई यूज्ड टू हैव कि मुझे लेफ्ट लेग गार्ड पहले बांधना है और राइट लेग गार्ड बाद में बांधना है. एंड आई थिंक इट्स साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट इट्स अ माइंड टेक्निक दैट पुट अस इन अ good position in terms of confidence. Right, okay. And also looking at one more other thing that we can analyze from the Pakistani angle, हम बात कर रहे थे किस तरह से एक स्टेज पे राजा पाकिस्तानियों ने कम विकेट गवाए थे और भारतीय खिलाड़ियों ने ज़्यादा. Still remember at around after the completion of 10 overs, while India stood at 135 for the loss of 5 wickets, Pakistan was 132 for the loss of 2 wickets. Now, given the way the Pakistanis started today and given the way the Indians started, from there, how would you analyze both the teams going forward after the first 5 overs? I think it wasn't the 10th over that you're talking about. 135 in 10 माने 200 का स्कोर पार हो जाता. This would have been the 15th or 16th over. Last के 3-4 ओवर में. 13th-14th के आसपास, right? So it definitely not the 10th over. Pakistan played the smarter cricket. Their batters were smarter today, and they made the most of it. I think there was one critical partnership that took them closer to victory, and anybody else who came after that was just throwing his bat on ball and getting a few runs. I think it was important that they consolidate the start and not lose too many wickets. Now India unfortunately lost to 2 openers who had good starts, Rohit first and then KL Rahul, and then you had 3 middle order batsmen who didn't score at all, whether it is Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant and Hardik Pandya. They didn't score at all. Yes. So, and you needed a Ravi Bishnoi to score 2 fours in the end to go past that 180 mark. So it was only a competitive score that India got. I would like to focus more on India's batting failure rather than 180 looks a big score, but it should have been 200 tonight on a flat deck. Where there was nothing much for the bowlers, and I think India should have got to 190 at least and then made a match of it. हम bowlers को हमेशा बहुत आसानी से ठोक देते हैं. I think tonight it was the batters who lost the match for India. जी, आइए कुछ और कॉलर्स हैं उनसे बात करते हैं. हेलो हाय, मैं वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ. हाय वेंकट. हाय, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. ओके,
मैं ये बात करना चाहता हूँ, जी हमारे ओपनर्स ने बार बार सिक्सर लगाने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। जी पिछले कुछ मैचों से ये कंसिस्टेंटली सिक्सर लगाने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। जी इसके बारे में गंभीर से हमारे कोच और बैट्समैन ऑल सोचना है। जी और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार 19th ओवर में एक बॉल भी स्टंप पर नहीं डाला। जी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेग जी। स्टंप के बाहर जी। इस तरह की गेंदें डाले, जी इसलिए इनको 19 रन पड़े। जी तो इन कमियों को दूर करना चाहिए। जी जी शुक्रिया वेंकट आपके सवालों के लिए। बस कुछ ही पलों में हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाएंगे। राजा, अ क्विक रिस्पॉन्स टू वेंकट्स क्वेश्चन। आई थिंक ही इज नेल्ड इट। वेंकट एक अच्छे स्टूडेंट है गेम के और हमेशा ही हमसे जुड़ते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट when someone like him is able to recognize that Bhuvi didn't bowl a good final over, his final over, he's actually nailing it. Also the fact that people like Rohit Sharma and Rahul seem to throw their wickets away by playing those big shots. And Raja, we'll also pause you right now over here sure. because we'll take our listeners directly to the post-match ceremony that's just started now. From the outside, you got the impression that this game would have taken a lot out of you as captain? Yeah, no, obviously it's a high-pressure game. We know that, and you got to be at it, every time. You can't let anything slip away. So obviously, a game like that can take a lot. But I mean, honestly, we were quite calm, to be honest, at the back end as well. Even in the middle, when there was a partnership between the two batters, Rizwan and Mohammad Nawaz. I think we were quite calm. We just felt, we need a wicket here, and things can change quickly. But that partnership obviously went a little long, and they batted brilliantly. A lot of young players, playing their first few internationals, their bowling attack, especially. So as captain, you must have felt obliged to keep talking to them because these are guys who have not been there often enough to know exactly what to do in a particular situation. Yeah, absolutely. I think, games like that, games like this can, bring the best out of them if they deliver. Obviously, there will be times where they will be challenged and things will not go the way they want to. But these are the games that can, make them. So I feel there is full potential in those guys. They've done it in the past wherever they've played. So it's just about handling that pressure situation pretty well. Obviously, there is a class in the opposition team as well, which we were challenged with today. But I mean, we were not surprised with that. Obviously, the kind of cricket they've been playing for a while now. We knew that we were in a chase. We had to bowl really well to defend that score. And we do understand, the pitch gets slightly better to bat in the second innings. But obviously, I'm pretty happy with how things went towards the end as well. We fought really hard. But yeah, I mean, it's a good learning for us. Games like this will get us to learn a lot of things. What we can do in certain situation, how we can attack, what are the right balls to choose to certain batters, the dimension of the ground, which is very, very important. One side is very big, one side is short. So what are the plans? I think those are the things, that, these guys can take away from this game. And like I said, I'm pretty happy with what happened today. Love the new approach that India have with their batting. I really like it. Interesting today that in the first 10 overs, 93 runs were scored and 88 in the second half. So when a situation like this happens, were you still happy in the end with the score that you had? You thought you had enough, or you felt maybe 10, 15 runs more? I mean, tough to say that. I thought it was a good score. Anything on any pitch, on any conditions, you get 180, it's a good score. Obviously, when you don't take wickets in the middle, it's always going to be tough because we do understand they bat pretty deep as well. But yeah, I mean, games like this, like I said, we got to learn a lot today. What sort of mindset we need to have when we are defending a score like that. And clearly in T20, no scores are comfortable. You want to get as much as possible. But towards the first half of our innings, I was pretty happy with the score we got. But again, like I said, you got to give credit to Pakistan. They played obviously better than us to get the result in their favor. Have to ask you the final question. There's so much attention and focus on Virat Kohli. He's had 3 innings now.
And, today was another terrific innings. Just your assessment of how his form has gone from, say, match number 1 in this tournament to today. I think the form is brilliant. There is no doubt about that. He batted sensibly in the middle. We needed somebody to bat long when the others were getting out in front of him. Obviously, he batted with that tempo as well. It was important to continue to keep doing what we want to do as a group, and I thought every batter, and especially Virat, getting that score, staying till the end, was also crucial from the team's point of view to get that score. Because we lost wickets in the middle. The two crucial wicket of Hardik and Rishabh actually was not needed at that point, but we want to come out with a very open mindset, play openly, so things like this can happen. We are ready to accept these kind of things. Moving forward, I think that is the kind of approach we want to take. And of course, and I've said it many a times, while taking that approach, you will not always have success. But we are, as a team, we are very much okay with that. Well, you've got 82 to 85% winning record with this approach, so it's a fantastic approach, and hard luck tonight. All the best for the next game. Thank you very much. So that was Rohit Sharma, the Indian captain. My next duty is to call upon the winning captain. There's a best catch of the match winner with a check of USD 3,000, and this goes to Khushdil Shah, one of the rarest of rare catches that you'll see. It's just amazing how he pulled off that one, and deserving winner of the catch of the match. Winner went high up in the air, and it's not the hands at the top, the set of hands at the bottom that took the catch. Mr. Rikan Pitti giving that award to Khushdil Shah. Next, I'm going to invite the Pakistan captain Babar Azam to sign the match ball for Mr. Naimi Sinha, CTO easemytrip.com. And I'm going to ask Babar to come and have a chat. आपकी एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो मुझे लगती है, मैं अभी आपको थोड़ा सा जानने लगा हूँ कि मैच हारो जीतो, आपका टेम्परामेंट, आपका जो एक मूड होता है वो सेम होता है. काबिल तारीफ़ है ये. अल्लाह का शुक्र है, और जिस तरह कोशिश यही की जाती है कि सिंपल रहें, चीज़ों को सिंपल रखें. अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने आज एफर्ट की है वो आउटस्टैंडिंग थी, और जिस तरह पूरा क्रेडिट टीम को जाता है. लग रहा था कि 180 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हाफ टाइम पे, या आप लग रहे थे कि बन जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह पावर प्ले जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया वो थोड़ा सा एज मिला उनको, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे बॉलर्स ने कम बैक किया और स्टिक किया 180 में, और उसके बाद जब हमारी पार्टनरशिप लगी, मेरी और रिजवान की इतनी पार्टनरशिप नहीं, लेकिन जो रिजवान और नवाज़ की पार्टनरशिप थी वो आउटस्टैंडिंग थी. वो यही था, वो मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए. जिस तरह नवाज़ ने बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग रहा हमारे लिए. ये प्रमोशंस जो है आपके टीम में कौन देता है? पिछले मैच में खुशदिल शाह ने प्रमोशन पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और आज मोहम्मद नवाज़. बिल्कुल, मेरे कोशिश ये होती है सिचुएशन के हिसाब से जो माइंड में चीज़ आती है उसी को अप्लाई करता हूँ, और मुझे लग रहा था कि नवाज़ यहाँ पे क्रूशल कर सकता है, क्योंकि उनके पास दोनों लेग स्पिनर्स थे, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग किया था और उसको वहाँ पे भेजा था. स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज. बिल्कुल, जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, शदाब ने स्पेशली, और उसके बाद नवाज़ ने, वो आउटस्टैंडिंग रहा था, और जिस तरह फास्ट बॉलर ने फिनिश किया वो काफ़ी अच्छा था. Well, congratulations आज के विन के लिए और अगले मैच के लिए. All the best. Thank you. So that was Babar Azam, the captain of Pakistan. Finally, our player of the match, and this one goes to Mohammad Nawaz, who is our player of the match for a score of 42 of 20 balls, plus the fact that he bowled 4 overs for 25 runs and got a wicket as well. So an interesting move made by Pakistan. And it was Mohammad Nawaz who was given the player of the match. Check of USD 5,000 and a trophy as well. And we are going to invite His Excellency Sultan Ahmed bin Sulaim to come and present the check to Mohammad Nawaz, a check of USD 5,000 and a trophy. 42 of 20 and 4 overs for 25 runs and a wicket, and that wicket of Surya Kumar Yadav.
सर वेरी वेल डन। ये T20 क्रिकेट है, ये कहते हैं ना मिस्ट्री स्पिनर्स और कुछ अलग अलग एक्शन वाले बॉलर्स का खेल लगता है, लेकिन आप पिछले मैच में, इस मैच में भी लाजवाब गेंदबाजी की, प्योर लेफ्ट आर्म स्पिन से। जी बिल्कुल, यही एक माइंड में होता है कि चीज़ों को सिंपल रखें और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करने के लिए उसी पे रहता हूँ और बस उसी पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक दो बॉल ऐसे हो जहाँ जिससे टर्न हो जाए, तो वो पता है फिर बैट्समैन के जो माइंड में डाउट आ जाता है कि बॉल टर्न हो रहा है, तो पहले एक दो ओवर में मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक दो बॉल टर्न करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद ये है कि अच्छी लाइन लेंथ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और फिर बैटिंग में आपको प्रमोशन मिला शायद इसीलिए कि लेग स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, तो ये मैसेज था आपके लिए कि जाके अटैक करें उनको? जी बिल्कुल, हमारा यही प्लान था। एक तो लेग स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे और ऊपर से यह कि राइट लेफ्ट की वजह से थोड़ा सा बाउंड्री का भी आ रहा था कि थोड़ी छोटी बड़ी बाउंड्री थोड़ा सा एज मिल रहा था, तो मैसेज यही था, क्लियर मैसेज था कि ऑब्वियसली 10 रन पर ओवर हमें चाहिए था उस वक्त, 10+ ओवर, और क्लियर था माइंड भी कि जाते ही जो भी बॉल मतलब एरिया में आएगा उसको हिट करना है। और सिर्फ स्पिनर्स को आपने नहीं मारा, फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छे आपने शॉट्स खेले, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी काफ़ी एक माइंड क्लियर था मेरा कि मैंने मतलब जाती जो मेरे एरिया में बॉल आएगी मैंने उसको हिट करना है, और यही था माइंड में कि मैंने अपनी बेसिक्स को जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और वैसे एक्स्ट्रा हिट करने की कोशिश नहीं करनी। कि कभी कभी होता है ऐसी सिचुएशन में, हाई प्रेशर गेम होता है कि आप बहुत ज़ोर से हिट करने चले जाते हैं, तो आप जो बेसिक्स होती हैं उनसे दिमाग हट जाता है, तो माइंड में यही था कि थ्रू दी लाइन जिस तरफ बॉल होगा उसी तरफ हिट करना है। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्लेयर ऑफ द मैच थे आज मैच इस बड़े मैच के, और पाकिस्तान ये मैच जीता तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, so well done. Thank you very much. Thank you. And there we had Mohammad Nawaz becoming, of course, the player of the match today, making 42 runs in just 20 balls, and also at the same time giving just 25 runs by in 4 overs and taking the crucial solo wicket of Surya Kumar Yadav. We'll talk about that, of course, but right now हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़े हैं। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे साथ इस समय कॉलर थे लेकिन अभी फिलहाल लाइन पे नहीं। ओके, लेट मी कम टू यू जया। A good decision on that front कि मोहम्मद नवाज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया आज? I think so. I mean, because the target was 180 and the cameo he played and the thing that he did with the ball as well. So he played an all-round approach, and T20 is all about all-rounders. So I think it's a fair decision. जी राजा, 20 गेंदों में 42 रन बनाए और 4 ओवर में 25 रन देकर सूर्य कुमार यादव का विकेट, तो आपको लगता है रिजवान से बेहतर ऑप्शन रहे ये हीरो ऑफ 2020 बन गए? देखिए, we can keep debating this till the cows come home and not be satisfied, but it's a good choice. Yes. It's not as if he's undeserving. He deserves. Right. For the way in which he came and scored those runs and helped Pakistan move from about 8 or 9 runs an over, pushing it past the 10 run an over mark. I think he played a blinder. Short innings, but very effective and impactful. So you can't complain about the choice. हालांकि मैं सोच रहा था कि रिजवान को मिलेगा मैन ऑफ द मैच, and I think Jay also said it would be Rizwan, but that's how it goes. This is a beautiful game. और हमसे गलतियाँ होती हैं जी। बस 1 मिनट शेष है। कल 5 सितंबर है, रेस्ट डे है। अगला मुकाबला 6 सितंबर मंगलवार को होगा भारत बनाम श्रीलंका दुबई में, लेकिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। तो जया, आप कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक कोच तो मतलब आप कुछ भी कहो कम पड़ेगा, बिकॉज किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए कोच की ज़रूरत होती है और एक मेंटर की ज़रूरत होती है। चाहे प्लेयर कितना भी बड़ा हो जाए, वो मेंटर का रोल कभी। आप किसको याद करती हैं अपने पूरे करियर में? आई थिंक आई हैड few coaches which I dedicate my whole cricketing career to, and I think they played a tremendous role in my life. Do journalists also have a coach? Of course they do. I will go back to my father, Amit, who was a sports journalist himself. I learnt a lot from him. But there is a Mr. K.P. Mohan, formerly of The Hindu. He's now retired. He's a terrific mentor. And आज भी आप उनको फ़ोन करो, केरला में सेटल होके रिटायर होके सेटल हुए हैं।
आज भी फ़ोन करो तो वो फ़ोन में हमेशा आपको सलाह मशवरा के लिए तैयार होते हैं. सो ऑल ऑफ अस नीड मेंटोर्स, ऑल ऑफ अस नीड कोचेस, ऑल ऑफ अस नीड गुड टीचर्स. और कल टीचर्स डे है तो सबको मुबारकबाद हर टीचर को. कल नहीं है, 12 बज गए अब. चलो जी आज है. ये तो अमित की अमित has got an eye on the watch. मेरी नज़र वहाँ नहीं पड़ती है. But congratulations to all the teachers, and actually we should say thank you to all of them for making us the people we are. Yes. I think teachers build a nation, and we must be grateful to them. Absolutely. Gratitude and reverence to all the teachers. Yes, indeed. He is wishing all the teachers and all the mentors and coaches a very happy Teachers' Day. And on that note, thank you so much, Raja. Thank Always you, a pleasure. Jaya. Thank you. I wish we had a better note to end this night on. But this is sport, Yes. and we've got to take it in our stride. And as we drive home, और जो आप घर में हैं, इस मैच का आनंद लीजिए. और आगे भी तो संडे को मैच है, वो मैच जीतेंगे. Correct, and it's been a good day of cricket. Thank you, Amit, for being with us also. और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम आपसे मुलाकात करेंगे 6 सितंबर को on, of course, when we cover the India-Sri Lanka. But for now, it's good night. Hero of the 20